सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक बेसिक कैलकुलेटर यूजिंग द VBA यूजर फॉर्म। सबसे पहले हम लोग लेबल लेते हैं। हमने क्या पे लेबल लिया और हमने इसको नाम दिया वैल्यू 1। ओके, तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे जो इसका बैक कलर है इसको कर देते हैं हम ब्लैक। सॉरी, नॉट बैक कलर, इसका जो फॉर कलर है ये कर देते हैं हम ब्लैक। और फॉन्ट में जाके इसका हम फॉन्ट चेंज कर देते हैं। ओके, सो अभी करते हैं, हम लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स और इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं। इसको हम देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फॉन्ट में जाके अगेन इसकी हम फॉन्ट साइज चेंज कर देते हैं। ओके, नाउ अगेन वी विल टेक अनदर लेबल। ओके, सो हम इसको अभी नाम देने वाले हैं वैल्यू 2। और इसका कलर हम करेंगे ब्लैक और फॉन्ट में जाके इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। ओके, now again we'll add a text box here. So this is my value 2. ओके, अभी क्या करेंगे, यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको हम नेम कर देंगे T1 और ये टेक्स्ट बॉक्स है इसको हम नाम दे देंगे T2। ओके, अब एक और लेबल लेते हैं, इसको हम यहाँ सेट करते हैं और इसको हम देते हैं रिजल्ट या फिर आंसर, whatever you like। एंड फॉन्ट में जाके अगेन इसकी सेटिंग थोड़ी सी हम चेंज कर देंगे। ओके, अभी लेते हैं यहाँ पर हम एक और टेक्स्ट बॉक्स। ओके, सो इसमें हम लोग इसमें हम लोग जो अपना आंसर वो प्रिंट करेंगे। तो मैं इसको ले लेता हूँ T3। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेते हैं कमांड बटन और उसको यहाँ सेट कर देते हैं लाइक दिस। ओके, और इसको हम दे देते हैं हम एडिशन साइन कि दिस इज फॉर द एडिशन। और फॉन्ट में आके यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम चेंज कर देते हैं बोल्ड। ठीक है, तो ये हो गया मेरा प्लस साइन। और इसको चेंज करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे और जो हमारे फॉर्म की सेटिंग है के अकॉर्डिंग हम सेट कर देंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा ये। ओके, so now this is the basic thing is ready. So now we talk about the how to code. So I'll click here in the command. After clicking on the command button, we will write the code t3 dot value equal to val value in the bracket start, and we will use t1 dot value and bracket close plus sign, and we will use t2 dot value, and then we will run our code. Okay, now we will enter the amount in the value 1 and value 2, and now we will do the addition. Okay, so now if I want to clear this button, I have to clear manually. So what we can do alternative here, uh, okay, so we can add a button here to reset this value. Okay, so now let's
Add a reset button here. So I'll take a command button. Sorry, mistakenly taken the textbook. I'll use a command button here and I'll rename it as a reset. And now let's change the background color. Okay, now let's code in the reset. So I'll simply use t3 dot value equal to double quotes two times, and similarly for the t1 and t2 you'll be using. Okay. Now let's try this. I'm adding some numbers here and then I'll do the submission. Now let's see reset button. So I have reset it successfully. Okay, let's try again and reset. Now I have reset again. Now as you can see, to exit from this user form, I have to click on the this red buttons here in the cross signs, and now we can create a button here to exit from this user form. Okay, so let's take a command button again and I'll rename it as a uh, exit system. You can rename whatever you want. Okay, and now I'll change the background color again. Okay, now we'll code in the button by double clicking. So there's a simple line. It will be unload space me. So this will unload you from the user form. Okay, so let's try again. I'm adding the numbers. Addition is working. Reset is working. Now exit system. So I exit from the macro running mode and came back to the designing mode. Okay, so this is done. Now let's do the other arithmetic operations like additions and subtractions. Then I'll use the minus sign here and I'll go to the font to increase this sign so that it will be visible properly. Okay, now I change the background color with now I'll code. So double click on the this button and I'll simply copy the addition button and change the sign from the plus to minus. Now let's run the code. So we can do the first value and the second value there minus. So I can see my all the operations are working. I can reset and exit system. Now let's add the multiplication button. I'll add a multiplication sign here. I'll go to the font and increase the font size and bold. Now let's change the background color. Okay, now again I'll double click here and I'll copy and paste the same command and I'll change the sign only. So it will be like T1 into T2. Now let's run the code. Now value 1. Okay, so plus is working fine. Reset minus is working fine and multiplication is working fine. Reset and exit system.
So all the buttons we have added here, these are working fine. Now the last button is this. Now we will do the divide options here. So I'll use divide sign here. I'll increase the size of the captions and I'll change the background color here now. Now when we will do the same, copy and paste, and I'll change the sign only. So now my calculator is ready. So let's test this again. So it's working fine. Multiplication working fine. Minus is working fine. And multiplication, all the buttons are working fine. So exit system. So this is our basic calculator, guys. Uh, if you like the videos, please subscribe the channel and to let me know your comment if you want to know anything. I'll update you on the comment box. Thanks for watching, guys.